From the Organization of Commerce and Management syllabus of 12th standard, some of the questions are very important, like case study. You are able to score good marks in this case study. That means if you are having 3 questions and the marks allotted for the case study is 3. So after answering correctly all these 3 questions, you are able to receive all 3 full marks. Only the required thing is that you have to read the case properly, carefully, and you have to answer it correctly. Okay, so from the page number 15, we are going to solve the 2 case studies from the chapter number 1. The first case study is Mr. Harshad is an entrepreneur and engaged in production of eco-friendly utensils. Both male and female workers are working in his factory. All male employees are directly working on machines, whereas female employees are working in packaging department. Mr. Sharath is working as a finance manager, while Mrs. Naina is working as HR manager, who is responsible for recruiting employees in the factory. On this basis, that means this is the full case we have received from the board. Okay, or in your textbook full case is given is like that. And now they have asked 3 different questions. The very first question is, identify any one principle of management in above case. If you are going to carefully observe the case, the division of work is the principle implemented, or we are going to easily identify division of work principle in this case. देखो यहाँ पे क्या दिया है, all male employees are directly working on machines, whereas female employees are working in packaging department. That means in case of male and female workers, division of work is done. Again, it is mentioned that Mr. Sharath is working as finance manager, while Mrs. Naina is working as a HR manager. That means clear-cut division of work is given in the case. So the answer of first question is division of work. Second question is, what is the designation of Mrs. Naina in this organization? देखो मैंने अभी कहा था, if you will read the case clearly, you are able to receive all 3 marks. And here in case study only, they have given what is the designation of Mrs. Naina in the organization. They have given the designation while Mrs. Naina is working as a HR manager. So her designation is HR, that is human resource manager, who is responsible for recruiting employees in the factory. तो मिसेस नैना का डेसिग्नेशन क्या हुआ, HR मैनेजर. थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्लानिंग कौन करता है, जो ओनर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है. और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर देखो अपने ही केस में दिया गया है, मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर. ओके, एंड ही इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स. अभी ये अगर पूरी उसकी कंपनी है, पूरा उसका एंटरप्राइज है, उसका बिजनेस है, सो नेचुरली ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल टोटल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So who is responsible? Mr. Harshad is responsible for overall planning of the organization. Now come to the second case of the same chapter. What they have given in the case, in
Fine Diamonds Limited, 200 employees are working in 3 shifts. कितने employees work करें? 200, 200 employees. In first shift, 60 employees. In second shift, 60 employees. And in third shift, 80 employees are working without sufficient breaks except lunch break. यानी उन्हें लंच ब्रेक के अलावा कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है. एंड शिफ्ट चेंज ब्रेक, दैट मीन्स फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के बीच में ब्रेक रहेगा. अनदर ब्रेक विल बी देयर इन सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट और लंच ब्रेक. इसके अलावा कोई भी ब्रेक एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहा. देन अगेन दे आर स्टेटिंग दैट no employees is able to complete the work in designated time. यानी कोई भी एम्प्लॉई अपना काम जितना टाइम दिया गया है वो टाइम में कंप्लीट नहीं कर पा रहा है. क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहा है? ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उनके टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है. which results into delay for next shift employees. यानी शिफ्ट चेंज होते समय जो ब्रेक मिल रहा है मगर जो पहले वर्कर्स का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ करके सेकेंड शिफ्ट को अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए जो मशीनरीज वगैरह है वो राइट टाइम पे नहीं मिल रही है. सो पहला ही शिफ्ट डिले हो गया, फिर दूसरा डिले होता है, फिर तीसरा और ज़्यादा डिले हो जाता है. ओके, सो दिस वन इज़ द टोटल केस और टोटल सिचुएशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक. नाउ दे हैव आस्क्ड 3 different questions for the case. The first one is identify which scientific principle needs to be followed by the company. कंपनी को कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, ज़रूरी है. सो द आंसर इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज द प्रिंसिपल नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट 2 साइंटिफिक टेक्निक्स which can be used for smooth flow of work in Fine Diamonds Limited. Suggest 2 scientific principles. यहाँ पे हमें 2 scientific टेक्निक्स को बताना है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस कंपनी का वर्क फ्लो स्मूथ हो इसके लिए. सो द रिक्वायर्ड टेक्निक्स आर: first technique, that is the work study, which includes time study, method study, motion study, fatigue study. And secondly, standardization of tools and equipments. So these 2 scientific techniques should be used for the smooth flow of works in Fine Diamonds Limited. थर्ड क्वेश्चन क्या है? Why the work is not being completed in time. अपने समय पे काम कंप्लीट, वर्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? सो द आंसर इज no employee is able to complete the work in designated time due to inappropriate time management, which results into delay for the next shift employees. So the work is not going to be completed due to inappropriate time management. So these are the answers of both the cases. You need to go through the cases, you need to read the case carefully, and then you have to answer it properly. If you have liked this video, then like the channel, share the channel and subscribe the channel.